A very good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, you can see that we discussed a very important topic of the sole proprietorship, financial statement of sole proprietorship, that is a positional statement. As like it is in this video, we also discussed how we will prepare the balance sheet and what are the order of the preparation of the balance sheet, that is known as the grouping and marshalling of the assets and liability of the balance sheet. So let's start the today's topic. Okay. So let's discuss about the format of the balance sheet. It is a very important steps and very important statement of any sole proprietorship. So let's move to the procedures and principle while we preparing the balance sheet of the sole proprietorship. So what are the format of the balance sheet? As you know very well, balance sheet is totally depend on the accounting equation. Accounting equation means assets equals to capital plus liabilities. And you know very well, balance sheet is not an account, it is a statement. It means it have a two side, left hand side and right hand side. It means it does not have a debit side and credit side. ये बात याद रखनी है. Most of the student कहते हैं इस साइड को डेबिट, इस साइड को क्रेडिट. बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता. बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड राइट हैंड साइड होता है. So it is very important and basic knowledge regarding the balance sheet is balance sheet have a two side, left hand side and right hand side. It does not have a debit side and credit side because it is a statement. Is that clear? So let's move to the preparation of the balance sheet. So the format of the balance sheet are as follows. First of all, we write down the name title of the balance sheet. As you know very well, जब हम ट्रेडिंग बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट टॉप में लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस को टॉप में लिखते थे. एज लाइक इट इज, फर्स्टली वी राइट डाउन द बैलेंस शीट ऑफ जिसका भी हम बैलेंस शीट बना रहे हो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, एंड the date on which we prepare the balance sheet, we write down the date at the second line, in the second line of the format and the actual balance sheet. So first of all हमने क्या लिखा, the balance sheet of Mr. X and Mr. जिसका भी बैलेंस शीट बना रहे हैं, as at मतलब किस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो. 30 सपोज यू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट 31st March 2020, सपोज यू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑन 31st December. So आप वहां डेट पुट करो. And the next and very important term is side. You know very well, balance sheet is statement, so it include the two side, same as it like is the. So it does not include the debit side and credit side. ये mistake मत करना कभी भी आप लोग. बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता. बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है. जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड रुपीज, एंड राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड दी एसेट्स. यहाँ ब्रैकेट में डेबिट करके क्रेडिट करके नहीं लिखना है. So this is a heading. So you can see that there are basically four column of the balance sheet of any sole proprietorship. The first column is liabilities, second column is amount, third column is the assets, and fourth column is an amount. So if we are talking about the liability side of the balance sheet, so it includes the following items. बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को इंक्लूड करते हैं. और इसका जो ऑर्डर होता है वो उस ऑर्डर पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि सर लाइबिलिटीज में हम सारे लाइबिलिटीज लिख दें, एसेट्स में सारी लाइबिलिटीज लिख दें, क्या इसका कोई ऑर्डर है? ऑर्डर मींस कि कौन सी लाइबिलिटी पहले लिखनी चाहिए, कौन सी एसेट्स पहले लिखनी चाहिए, कौन सी लाइबिलिटीज बाद में लिखनी चाहिए, कौन सी एसेट्स पहले और कौन सी एसेट्स बाद में. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. तो उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Firstly, we discussed how we will prepare the balance sheet of the sole proprietorship. Basically, the format of the balance sheet include the two side of the balance sheet. First and very important, left hand side and right hand side. It does not include the debit side and credit side because it is a statement. It is not an account. So, liabilities में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं. सो मैं लाइबिलिटीज के नाम लिख देता हूं. लाइक क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में भी राइट डाउन द creditors. Bills payable, as you know very well, it is in liabilities. Bills payable,
as well as the very important bank overdraft is a liability, and the various kind of the outstanding expenses, as you know very well, outstanding expenses also liabilities. So outstanding expense, advance income, and apart from this, if you know very well, if we taken a loan from anyone, अगर हम लोन ले ले किसी से, इट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ द लोन, शॉर्ट टर्म लोन एज वेल एज द लॉन्ग टर्म लोन। तो चाहे हम शॉर्ट टर्म लोन लें चाहे लॉन्ग टर्म लोन लें, ये सब के सब किस में इंक्लूड होंगे, लाइबिलिटी साइड में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, सो द लोन, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज reserves. If sole proprietor prepared any kind of the reserve, so it will be placed on the liability side of the balance sheet. The next, reserve, after the preparation of the reserve, when we are talking about the capital of the sole proprietorship. If we are talking about the capital, so capital includes the various things in it. Like, firstly we write down the opening capital of the business. Opening capital मतलब business को शुरू में कितनी कैपिटल थी, यानी सपोज वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी में क्या कैपिटल थी। सपोज वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एट 31 मार्च, तो 1 अप्रैल में प्रीवियस ईयर में कितनी बैलेंस कैपिटल थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग कैपिटल, thereafter we add the net profit and net loss। अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, नेट लॉस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। and if there is any kind of the interest on capital, so it will be added, and if there is any kind of drawing, so it will be deducted। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग बाद में इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको एक रफली फॉर्मेट प्रोवाइड करता हूँ। सो यू कैन सी दैट कैपिटल लिखने का बहुत ही अलग तरीका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड को टोटल कर देते हैं। सो लाइबिलिटी साइड में वी शोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइबिलिटीज, as you can, the creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expense, advance income, it is known as the current liabilities। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, current liabilities, any liability which are due within a year। लोन्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिस लाइबिलिटी का पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है। लोन विच आर रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म, and reserves and capital are the part of the capital। So you can see that on the liability side of the balance sheet of the sole proprietor, we write down the 3 types of the item, that is the current liabilities, non-current liabilities and capital। इसमें हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कैपिटल में कैसे डिटेल में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। The next is the asset side of the balance sheet। When we are talking about the asset side of the balance sheet, so asset side of the balance sheet of the sole proprietorship, we write down the different kind of the assets। You know very well that is the cash in hand, cash at bank। Okay, यानी मेरे पास कितना पैसा है, बैंक में मेरे कितना पैसा है, as well as bills payable। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अपोजिट होता है, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स। एडवांस इनकम का अपोजिट होता है, दैट इज एक्रूड इनकम। ओके, एंड सपोज यू टेक द लोन, सो इट इज अ लायबिलिटी। सपोज यू प्रोवाइड द लोन, so you know very well it is known as the investment, and investment can be classified into 2 way, that is a short term investment। अगर आपने 1 साल के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, सो इट विल बी नोन एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और सपोज अगर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, सो इट विल बी नोन एज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो एसेट्स में आप लोगों ने ये राइट डाउन किया, उसके बाद आपके पास बचता है फिक्स एसेट्स। यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ द फिक्स एसेट, लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। सो फिक्स एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी, दैट इज अ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो कितनी भी तरह की फिक्स एसेट्स हो, लाइक अ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड आफ्टर दैट वी टोटल, हम उसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो दोनों साइड है, इट इज द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द डिफरेंट कंपोनेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें एक और टर्म आता है डेट इज अ डेटर, यू नो वेरी वेल, क्रेडिटर का अपोजिट होता है डेटर, तो आप डेटर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो एसेट साइड में. So you can see that what are the basic uh, steps for the preparation of the balance sheet of the sole proprietorship. So you can see that from cash in hand, cash at bank, bills payable, debtor, prepaid, accrued, investment, short term, it will be known as the current assets, because current assets are those assets which are converted into cash within 1 year. But when we are talking about the investment, tangible, intangible, it will be known as the non-current assets. And non-current assets classified into two way, that is a fixed assets and investment. Fixed assets जो long term हो, investment जो long term purpose के लिए invest किया गया हो, and fixed assets which include the two types of the asset, tangible fixed assets and intangible fixed assets. सो बेसिकली आपने आइटम्स देखे कि हम लाइबिलिटीज में और एसेट्स में बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं. Okay, so when we are talking about the liability side of the balance sheet, so we can see that the three types of the liabilities are shown in the left hand side of the balance sheet, that is the current liabilities, non-current liabilities and capital. If you are talking about the asset side, so you can see that in the asset side, that is the right hand side of the balance sheet, we include the two types of the asset, that is the current assets and non-current assets. It records the fixed assets, whether it is a tangible or intangible. Okay, so you can see that how we will prepare the balance sheet of sole proprietorship. As you can see that on your screen, this is a roughly format of the balance sheet of sole proprietorship. So इस फॉर्मेट को हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन द लाइबिलिटी साइड देयर बेसिकली थ्री मेजर हेड ऑफ द बैलेंस शीट of the sole proprietorship, that is the current liability, non-current liabilities and the capital. And when we are talking about the asset side of the balance sheet, so we can see that the two types of the assets shown in the asset side of the balance sheet of sole proprietorship, that is the non-current assets and the current assets. तो उसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इस फॉर्मेट को. So if you are talking about the fair and very simple format of the balance sheet of sole proprietorship, that is on the liability side, we write down the capital of the sole proprietorship, non-current liabilities of sole proprietorship and current liability of business, और उसको टोटल करते हैं. And when we are talking about the asset side of the balance sheet, so we can say there are basically two types of the asset shown in the asset side of the balance sheet, that is non-current assets and current assets. Okay, so अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ recording of the liabilities and assets in the balance sheet of the sole proprietorship. It is a very important question. अगर आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन आप अपने मन में लाओ, पैदा करो इस क्वेश्चन को कि सर क्या यही ऑर्डर है लाइबिलिटी साइड में लिखने का, क्या यही ऑर्डर है एसेट साइड में लिखने का. सो बेसिकली बैलेंस शीट बनाने का एक ऑर्डर होता है, और इसके लिए एक अलग से टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में. सो यू कैन सी दैट लाइबिलिटी साइड में तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, कैपिटल ऑफ द बिजनेस, नॉन करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. एंड एसेट साइड में दो तरह की एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. And you know very well what is the capital amount or value of the goods brought by the businessman in the business, which is known as a capital. What is non-current liability? Any liability which are paid or due after the 1 year, after the one accounting period of the business, that is a non-current liabilities. And current liabilities are those liabilities which are paid within a one accounting year, within the same accounting year. If we are talking about the non-current assets and current assets, so non-current assets are assets which include the three things: investment, long-term investment, tangible fixed assets and intangible fixed assets. And current assets are those assets which are converted into cash within 1 year.
So basically you can see that कि ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है। इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट अभी बताया इस वीडियो में, सो यू कैन सी दैट उसमें सारे आइटम्स लिखे थे। उन सारे आइटम्स को मैंने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। जैसे कैपिटल में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में वी रिकॉर्ड द लॉन्ग टर्म लोन्स, public deposits, and current liabilities include the data, creditors, bills payable, outstanding expense, advance income, okay, and bills payable. And if you are talking about the non-current assets, so non-current assets include the two things you know very well: long-term investment, tangible fixed assets like land, building, patent, plant and machinery, land and building, furniture and fixtures, motor vehicle, and intangible fixed assets like a goodwill, patent, copyright, know-how, trademark. And current assets include all the assets which are converted into 1 year, that is a debtor, bills receivable, cash, cash in hand, cash at bank, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। ये सारी चीजें हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो इनका क्या ऑर्डर है, हम किस ऑर्डर में लाइबिलिटीज के आइटम्स को और किस ऑर्डर में एसेट्स के आइटम्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, अब हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग in the liabilities and asset side of the balance sheet of the sole proprietorship? Let's we discuss it। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? The name of this topic is grouping and marshalling of assets and liabilities। So please note down in your copy, the next topic of this video is grouping and marshalling and marshalling of assets and liabilities। Okay, so what is grouping and marshalling of assets and liabilities? So let's we discuss it। What is grouping? Grouping means putting items, grouping means putting items of a of a similar nature, items of a similar nature under a common accounting head। So what is grouping? Grouping means putting items of a similar nature under a common accounting head। यानी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जो आइटम्स सिमिलर नेचर के हैं, जो आइटम्स सिमिलर नेचर के हैं उनको एक ही अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करना। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसमें ग्रुपिंग का मतलब ये होता है ग्रुप करना। ग्रुप हम कैसे कहते हैं? बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, सो यू नो वेरी वेल, ग्रुपिंग मींस जो सिमिलर आइटम्स हैं, नेचर के आइटम्स हैं, उनको एक ही कॉमन अकाउंटिंग हेड के अंदर रिकॉर्ड करना, दैट इज नोन एज अ ग्रुपिंग। एंड नंबर सेकंड, व्हाट इज मार्शलिंग? द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ assets and liabilities in a particular order। The arrangement of assets and liabilities, the arrangement of assets and liability in a particular order in the balance sheet, in the balance sheet is called marshalling।
Okay, so I hope it is clear for you what is grouping of assets and liabilities and what is marshalling of assets and liabilities. So what is marshalling of assets and liability? Marshalling means the arrangement of assets and liabilities in a particular order. यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को शो करने के लिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड करने के लिए, बैलेंस शीट में शो करने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, विच इज नोन एज अ मार्शलिंग. So you can see that what is grouping and marshalling of assets and liabilities. Grouping means putting items of a similar nature under a common accounting head. What is grouping? Grouping means putting items of a similar nature अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड. यानी जो आइटम्स सिमिलर नेचर के हैं उनको एक ही अकाउंटिंग हेड के थ्रू प्रेजेंट करना, दैट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एंड व्हाट इज मार्शलिंग? द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड मार्शलिंग. मार्शलिंग क्या हमें प्रोवाइड करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड करना. जैसे ही आपने देखा लायबिलिटीज में हम पहले क्या रिकॉर्ड करते थे? कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. और एसेट्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे? नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. तो उसका एक वे है. ग्रुपिंग तो आप समझ रहे हैं. ग्रुपिंग का मतलब क्या है? जैसे सारी करंट एसेट्स को एक साथ रिकॉर्ड करना, सारी करंट लाइबिलिटीज को एक साथ रिकॉर्ड करना, सारे कैपिटल्स के आइटम्स को एक साथ रिकॉर्ड करना, नॉन करंट लाइबिलिटीज को एक साथ रिकॉर्ड करना, नॉन करंट एसेट्स को एक साथ रिकॉर्ड करना. दैट इज नोन एज अ ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का मतलब है जो आइटम्स सिमिलर नेचर के हैं, एक तरह के हैं, उनको एक अकाउंटिंग हेड के थ्रू प्रेजेंट करना, एक साथ प्रेजेंट करना. जैसे ये नहीं कि पहले हम करंट लायबिलिटी दिखा दी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी दिखा दी, फिर करंट लायबिलिटी दिखा दी, फिर नॉन करंट आइटम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी सोल प्रोडक्शन की, फर्स्टली वी शो द बैंक ओवरड्राफ्ट, देयर आफ्टर वी शो द लोन, देयर आफ्टर वी शो द बिल्स पेबल. तो इट इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर बिकॉज ग्रुपिंग होना चाहिए. अगर आप करंट लायबिलिटी को शो कर रहे हैं तो एक साथ सारी करंट लायबिलिटी लिख दो, फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिखो, फिर कैपिटल लिखो, ग्रुप करके लिखो. उसी तरह से एसेट्स में भी पहले आप करंट एसेट्स को पूरा राइट डाउन कर दो या तो पहले नॉन करंट एसेट्स को राइट डाउन कर दो. मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि करंट एसेट्स पहले आपने डेटर लिखा, फिर लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, फिर प्लांट एंड मशीन लिख दिया, फिर गुडविल लिख दिया, फिर गुडविल के बाद फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिख दिया. तो आपको प्रॉपर सिमिलर आइटम्स जो हैं, जो सिमिलर नेचर के आइटम्स हैं, उनको एक साथ अगर प्रेजेंट करो तो एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट करो और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट करो. सो ग्रुपिंग का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जो आइटम सिमिलर नेचर के उनको कॉमन अकाउंटिंग हेड के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए. यानी अगर हम करंट एसेट्स राइट डाउन कर रहे हैं तो सिर्फ करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद हम नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करें. मिक्सअप नहीं होना चाहिए उसी में सारी चीजें. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली there are basically two way, the two order by which we calculate the by which we prepare the balance sheet. तो marshalling के two way है. So there are two way to present the balance sheet. यानी बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली टू वे प्रोवाइड किए गए हैं. दो तरीके हैं. फर्स्ट, इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड नंबर सेकेंड इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस. ये जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस. बेसिकली लिक्विडिटी का जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि जो चीजें इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं उन्हें आप पहले दिखाओ, फिर कम लिक्विड को दिखाओ, फिर स्टेबल को दिखाओ. उसी तरह से परमानेंस का मतलब है जो चीजें बहुत ही लेट में लिक्विड में कन्वर्ट हो, कैश में कन्वर्ट हो, उसको बाद में दिखाओ. तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं. पहले हम लोग रिवाइज कर देते हैं जो हमारा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ अकाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटी. सो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मींस grouping is a steps in which we putting items of a similar nature under a common accounting head, whereas arrangement of assets and liability in a particular order in the balance sheet is called marshalling. There are basically two way to present the balance sheet. That is a marshalling के point of view से बोल रहे हैं कि दो तरह का order होता है.
मार्शलिंग का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी को शो करने का ऑर्डर। तो दो तरह का ऑर्डर है मार्शलिंग के, टू ऑर्डर्स हैं। देयर आर टू वे टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मार्शलिंग, दैट इज इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी और इन ऑर्डर टू परमानेंस। इन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। So the first one, in order of liquidity, in order of liquidity says that according to this method, according to this method, and assets which is not assets which is not which is most easily which is most easily converted, according to this method, and assets which is most easily converted into cash, which is most easily converted into cash, are placed at the top of the balance sheet। यानी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करता है कि वेन एवर वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जब भी हम किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी एसेट्स को हम सबसे टॉप पे शो करेंगे, सबसे पहले शो करेंगे जो सबसे इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में। यानी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी सेज दैट कि जो एसेट्स सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम बैलेंस शीट में टॉप में शो करेंगे। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मींस according to this method an assets which is most easily converted in cash, यानी जो एसेट सबसे इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम बैलेंस शीट के सबसे टॉप में यानी सबसे पहले लिखेंगे। जो लीस्ट कन्वर्टेबल एसेट्स होंगी उन्हें हम बाद में शो करेंगे इन दी बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। इन द सेम वे दोज लाइबिलिटीज, ये तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बता दिया, दोज लाइबिलिटीज those liabilities which are to be paid earliest, जिस लाइबिलिटी को हमें सबसे पहले पे करना है अर्लीस्ट विल बी रिटन फर्स्ट, will be written first। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। यानी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये बताता है कि जब हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, वेन एवर वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, हम उस एसेट्स को सबसे पहले शो करेंगे जो सबसे मोस्ट इजिली कन्वर्टेड, जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? एंड जो लाइबिलिटी सबसे पहले पे करनी है, द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड अर्लीस्ट, उसे हम सबसे पहले शो करेंगे। Is that clear? And number second is in order of permanence. In order of permanence. In order of permanence is just opposite of the liquidity order. In the order of liquidity का just opposite होता है in the order of permanence. According to in the order of permanence, assets which are not most easily convertible are placed at the top of
balance sheet, whereas liabilities which are paid at last will be written first. देख रहे हो आप लोग कि ये it is a just opposite of the it is a just opposite of the in the order of liquidity. ऑर्डर ऑफ परमानेंस ये कहता है कि वो एसेट्स जो सबसे जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में, जो बहुत ही लेट में कैश में कन्वर्ट होगी, द एसेट्स विच आर नॉट मोस्ट इजिली कन्वर्टेड आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट। यानी वो एसेट जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती उसे हम सबसे पहले शो करेंगे, और लाइबिलिटीज जिसको हमें पे करना है एट लास्ट, जो सबसे बाद में पे होगी लाइबिलिटीज, उसे हम सबसे पहले शो करेंगे। सो लिक्विडिटी कहता है कि वो एसेट्स पहले लिखो जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, और लाइबिलिटीज जिसे हमें तुरंत पे करना है उसे सबसे पहले लिखो। ऑर्डर ऑफ परमानेंस कहता है कि वो एसेट्स जो कि सबसे लास्ट में कन्वर्ट होगी कैश में, जो सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होगी उसे पहले लिखो, और लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें सबसे लास्ट में करना है उसे पहले लिखो। ओके, so I hope it is clear for you what is in the order of liquidity and what is in the order of permanence. Okay, so in this video you can see that how we will prepare the balance sheet of the sole proprietorship, and what are the grouping and marshalling of the assets and liabilities, and we can see that there are basically two order of the preparation of the balance sheet, that is in the order of liquidity and in the order of permanence. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot.